Okay, so let's run the demo then. RTB demo, and let's see if it runs. Yeah, so you should get this. This window will appear. And if that window appears, that means you have installed the toolbox successfully. Okay. So the caption for this, let's call it figure 1. Sorry. Figure 1. Okay. And now you can explore it even though you don't know about these topics yet, but it's fine. You can, let's say you can run some animation. And when I click that, it says continue. I press enter, and continue, enter again. And now something should appear because it's plotting a robot. This P560 is a very famous industrial robot, kind of an antique. It's very old. It was one of the first industrial robots made more than 40 years ago. But it's still being used for academic purposes, for learning. So it's called Puma 560. So now your robot is here. It doesn't look like one right now, but yeah, it's following the path. If I could look at it from the top, yeah. Okay, so how this represents an industrial robot, we will understand that later. But it works, at least the toolbox works. Continue again, press enter. It computes a lot of different parameters related to the robot. This particular table is very important. It's called the DH table. And what does it represent? That's the topic of the first 2 chapters. And how to reach it, how to compute one for a given robot, or how to understand one if already we have the DH table. So what important information these parameters represent. For example, there is theta, there is D, there is A, and there are 6 A's. This is alpha, another parameter. We call it link twist. And then there are offsets. So we'll understand that, but at least we were able to successfully run this demo. And you can put the screenshots in your lab reports in order to, and make sure those screenshots are not from one another. I have to make sure that you don't copy. Your lab results is horrible because you guys took the lab not serious. A lot of people just try to get away with it without working actually on computers. You just copied each of the lab reports. So that's not acceptable this time. Okay. So this was it. Any questions so far? Which is समझ नहीं आई हो? So this was yeah, we can, in fact, this बहुत basic हो जाएगा. हम कह सकते हैं कि installation of robotics toolbox. So this is our lab title. And yeah, so what I can do is I can still, if you don't have any question, then let's start this simulation. Yeah, and if I click on rotations, let's see what happens. It gives me a matrix. Okay, so let's follow these steps. Once you have that, once you have done that, RTB demo, then after that you come again and click on
rotations. When you click on rotation, you get this thing, this command. I just clicked there and this, everything that you see here appeared. That means that even if I copy this and stop this simulation, Control C, I think. No. Yeah. Clear. Oh, sorry about that. Clear नहीं करना because it runs that toolbox and remembers its path and a variable here. ये तीन चीजें डिलीट नहीं करनी जब तक आप इस टूल बॉक्स में काम कर रहे हैं. अगर डिलीट हो जाए तो उसको फिर से रन कर दें सारा. So what we did was we copied this. Okay, you can just say CLC, yeah, and paste this. It means on the MATLAB this, you can paste this command and let's see what it gives. You press enter and it gives you a rotation matrix. It's a 3 by 3 matrix, 3 rows and 3 columns. And I can check the size of this. Size of R. It's 3 by 3. So if you give that, you get this as an output. So what does it represent? It represents a rotation matrix. What is a rotation matrix? We'll understand it in theory class. But right now we're just running some commands and seeing that how it works. Rotation matrix के लिए general जो formula है, it looks like this. 3 by 3 rotation matrix. It looks, which rotation was it? It was about rot x, yeah, it was rotation about x. तो rotation about x के लिए जो general formula है वो है ये हम थियरी में पढ़ेंगे लेकिन मुझे फिलहाल वो मैट्रिक्स का फॉर्मूला चाहिए. Rotation matrix about x-axis. 3 by 3 rotation matrix about x-axis, so it appears here, the top one. So let's copy this one. Okay, so this belongs to the theory, so put it under the theory. Yeah. Rotation matrices. Standard, these are standard rotation. इसका मतलब इसके अलावा भी हैं, हाँ इसके अलावा भी हैं. And these one represent, sorry, copy नहीं हुआ. Copy image and paste it. Yeah. So now if you see the first one represents rotation of something, a vector, rotation of a vector about the x-axis by amount theta. Rotation by amount theta about x-axis. इसका मतलब है आप about y भी rotation कर सकते थे, about z भी कर सकते हैं. Yes. So let's say मेरे पास ये matrix है, first one, और मुझे थीटा आप देते हैं और मुझे कहते हैं कि भाई रोटेशन मैट्रिक्स फाइंड करें. तो कैसे करूंगा मैटलैब में? एक तो रोबोटिक टूल बॉक्स का कमांड है रोट एक्स, लेकिन अगर वो हम देखना चाहते हैं, अगर हम खुद करते रोबोटिक टूल बॉक्स में ना करते तो हम कैसे करते? तो ऑल यू नीड इज दिस मैट्रिक्स. हाउ टू एंटर दिस मैट्रिक्स इन मैटलैब, ये अभी आप देख लेंगे. सो लेट्स कॉल इट माई आर, एक्स भी लिख दें, and then you just start the matrix, or if you look here, it's 1 0 0, the top row 1 0 0. Second row is 0 cos of theta minus sine theta, 0 cos of theta. फिलहाल मैं थीटा 0 दे देता हूँ, खैर फिर बाद में चेंज कर दूँ. Minus sine of theta. So every semicolon represents the start of a new row. You should know this. Okay.
कॉलम्स के बीच में बेशक आप कॉमा डाल लें या स्पेस डाल लें, both are okay. And last one is 0 sin theta cos theta. 0 sin of 0, 0 sin of 0 cos of 0. अब ये मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया. That means the matrix has completed. Now if you press enter, you get this rotation matrix, which is an identity matrix. It's okay because you're not doing any rotation. The theta is 0. When theta is 0, it means rotation by 0 degrees, which means no rotation. यहाँ इन्होंने जो फाइंड किया है वो पाई बाई 2, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2. पाई बाई 2 in radians is 90 degrees. How do I know? There is a command rad to degrees pi by 2. It tells me that it's 90 degrees. And I want to find for this 90 degrees, for pi by 2, I want to evaluate this rotation matrix. Here, the theta is pi by 2. Give me what is the rotation matrix. So I just go back, up arrow in MATLAB will take you back to the previous command in the history. And you just go and replace that 0 with pi by 2 everywhere. Pi by 2, pi by 2, pi by 2, and pi by 2. So now our rotation matrix should match the robotic toolbox one. 1 0 0 0 0 minus 1 0 1 0. It's the same as this. So we did this by ourselves, but what MATLAB Toolbox does is wrote X command and just give it the theta. Similarly, Y command rotation about Y is wrote Y, and rotation about Z is wrote Z. Okay, so we can compute these three in MATLAB. So that was either you click on rotations, okay, or we can say that we can verify the above answer by computing the rotation matrix by ourselves. How? You just enter this matrix as this. And it gives me, this was the command I gave, and I got the same output as this one. Okay. So this is what, this is how I verified it. And similarly, we can verify the other one as well. So that's also, please verify. Please verify the output returned by the RTB commands root x pi by 2 जरूरी है हमेशा वो कुछ और एंगल भी ट्राई कर सकते हैं root y and wrote about rotation about z. Okay, please verify the compute. So it means verify mean compute by yourself, compute without RTB. Okay, so all these commands would work. Even the robotic toolbox was not there, this thing would work because this is MATLAB. This is not robotics toolbox. रोबोटिक टूल बॉक्स ने आपको ये चीज आसान करके दे दी कि भाई इस कोड को पीछे रख दिया इस सिंपल कमांड के पीछे, और ये हम उस रोबोटिक टूल बॉक्स के मैनुअल से भी वेरीफाई कर सकते थे. उसमें ये इसकी तफसील दी होगी. आई कैन शो यू जो मैनुअल है इसका. अब नाउ आई एम लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कमांड or road X. You just search that, and the description of that has been given on page number 205. If you go to 205 plus 9, 20, 215,
So the rotation is a 205. Page number is oh, he doesn't have page. Yeah, page number is there 205 page. Yeah, so these are the this is Rotax. So Rotax की डिस्क्रिप्शन पढ़ लें. ये क्या करता है? ये कमांड है, इसको आप थीटा देंगे. It's actually SO3 अभी छोड़ दे, is a rotation matrix of 3 by 3 representing a rotation of theta radians about the x-axis. अगर आप चाहते हैं कि थीटा में डिग्रीज में दूं, तो फिर आप इधर डिग्री स्पेसिफाई कर दें बाकायदा. फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मैंने जब r कंप्यूट किया अबाउट z बाई पाई बाई 2, तो इसने मुझे ये वैल्यू दी. लेकिन अगर मैं पाई बाई 2 की जगह 90 डिग्रीज दे दूं, तो फिर इधर डिग में आपने स्पेसिफाई करना होगा एज ऑप्शन कि मैं जो वैल्यू दे रहा हूँ वो डिग्रीज में दे रहा हूँ. ठीक है. सो नाउ यू सी दैट हाउ मच दिस टूलबॉक्स मेक्स आवर लाइफ इजी. एनी क्वेश्चन? नहीं है क्वेश्चन? देखें, आइडियली लैब का तरीका ये होगा कि आप लोगों के पास इस वक्त कनेक्शन सही हो, कंप्यूटर हो, इंस्टॉलेशन हो. इस वक्त टास्क मैं आपको दूं और मैं इधर बैठा रहूं और आपको कहूं कि आप टास्क करके मुझे दिखा दें. लेकिन मुझे पता अगर मैं ये करने लगूं तो पूरे लैब में 5 बंदे हैं, उनके पास कंप्यूटर रेडी है. कोई कहता है मैं मोबाइल से ऑनलाइन हूँ, कोई कहता है मेरा डेटा नहीं है. सारे एक्सक्यूजेस आना शुरू हो जाएंगे. तो इसलिए मैं आपको ये टास्क घर के लिए दे रहा हूँ. बट नेक्स्ट वीक आई हैव टू मेक श्योर दैट एवरी वन ऑफ यू हैव डन इट. दैट्स इम्पोर्टेंट. वरना मैं सिर्फ लगा रहूंगा और आप सुनते रहेंगे. कुछ चीजें समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगे. जस्ट यू पुश इट. No, I don't have to let you push it. You have to take it seriously. So this was a lab today. Any questions so far? सर ये वेरीफाई का तरीका जरा बताएं. वेरीफाई का तरीका देखें. फार्मूला आपको गिवन है. आप इस फार्मूला को मैटलैब में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो लेट्स से मैं इस बार जी करता हूँ. जी वाला एक्स ऑलरेडी कर चुका हूँ. तो जी वाला उस मैट्रिक्स को अपने सामने रखें. इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रोबोटिक्स, अगर आप एक 3 by 3 मैट्रिक्स मैटलैब में देते हैं, लेट्स से इट्स कॉल्ड ए, और उसमें वैल्यूज है 1 2 3, फिर सेकंड रो में वैल्यू है 4 5 6, फिर थर्ड में है 7 8 9, और ब्रैकेट बंद, एंटर. दैट्स हाउ यू एंटर अ मैट्रिक्स इन मैटलैब. अब आप इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर सकते हैं. जस्ट det ऑफ ए एंड दिस गिव यू डिटर्मिनेंट. तो अगर आपको ये आता है तो फिर ये मैट्रिक्स एंटर करना मुश्किल नहीं है. ठीक है. अच्छा, मैट्रिसेस के अलावा कॉज कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स से कॉज 90 हमें पता है कि 0 है, तो मैटलैब से कैसे वेरीफाई करेंगे? वी गिव कॉज थीटा, कॉस पाई बाई 2. मैटलैब रेडियंस में काम करता है, तो अगर आप डिग्रीज में करेंगे तो खुद कन्वर्ट करके देंगे. अभी तो इसने 0 के बजाय बहुत ही छोटा नंबर दे दिया, लेकिन इट्स ओके, ये भी 0 ही है. ठीक है. e raised to power 10 raised to power minus 17, 6.12 into 10 raised to power minus 17, which is practically 0. ठीक है. और इसी तरह साइन 45 किसी को पता हो, 45 is pi by 4, I think it's 1.5, no 0.707. ठीक है. अब आपने एक ऐसा मैट्रिक्स रिकंस्ट्रक्ट करना है जिसके एलिमेंट्स साइन और कॉज हैं. तो वो कैसे करेंगे? वो बड़ा सिंपल है. लेट्स से मैं कहता हूँ आर जी, ये आर जी, और ये मैट्रिक्स मैंने इंटर करना है. तो ब्रैकेट शुरू कर दें. फर्स्ट एलिमेंट इज कॉज ऑफ थीटा, कॉज ऑफ, क्योंकि अच्छा चलें लाइफ आसान बना देते हैं. लेट्स मेक अ वेरिएबल टी एच इज पाई बाई 2. चलें, अब हमारे पास टी एच आ गया. सॉरी, वाई एच तो नहीं है. टी एच आ गया पाई बाई 2, पाई 3.14 by 2.
अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे थीटा की जगह, ये वैल्यू। तो अब आप मैट्रिक्स बना लें, आर जी, first start of the matrix, first element is cos of theta, cos of theta, ऑफ के लिए बस ब्रैकेट यूज करें, cos, और ब्रैकेट में असल में ये फंक्शन है ना, इस फंक्शन को आप वैल्यू पास कर रहे हैं कि भाई इस वैल्यू के लिए cos इवेल्युएट करो, फिर कॉमा माइनस साइन ऑफ थीटा, ये सेकंड एलिमेंट मैंने एंटर कर दिया, ये वाला, फिर कॉमा जीरो, फिर सेमी कॉलन, क्योंकि अब मैं अगले रो पे जा रहा हूँ। अब एंटर करें, अब आपसे ये अगला रो एक्सपेक्ट कर रहा है, वो है साइन थीटा, तो साइन ऑफ टी एच कॉमा, फिर है कॉस थीटा, कॉस ऑफ टी एच कॉमा, फिर है जीरो, फिर सेमी कॉलन, फिर आखिरी रो तो बड़ा इजी है, जीरो कॉमा जीरो कॉमा वन। अब आपने ब्रैकेट बंद कर देना है और एंटर प्रेस करना है। सो नाउ दैट इज योर आर ऑफ जी फॉर पाई, थीटा क्या था, थीटा पाई बाई टू, 90 डिग्रीज। अब आपको कहे मैं थीटा आपको 180 देता हूँ, तो आप जाके बैक एरो से जाके थीटा की वैल्यू चेंज कर दें, थीटा किधर गया, लिख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई, तो पाई मीन 3.14 रेडियंस, डिग्रीज में ये 180 डिग्रीज है। अब मैंने इसके ऊपर ये मैट्रिक्स कंप्यूट करना है, ये तो कॉपी करके इधर फिर से पेस्ट करना ये कमांड, लेकिन इस बार इसको पता है कि थीटा कुछ और है, तो ये आपको कुछ और वैल्यू देगा। लास्ट टाइम दिया था 0 माइनस 1 0 1 0 0 0 0 1, इस बार दे रहे माइनस 1 माइनस 1 0 0 0 minus 1 0 0 0 1, that was for theta pi by 2, this is for theta pi 180 degrees। तो जो टास्क है आपका, इसमें आप सिर्फ पाई बाई टू के लिए नहीं करें, एटलीस्ट 5 थीटास कर लें, थीटा टी एच टी एच टी एच, ठीक है, एंड टेक टी एच any 5 values between 0 and 360 degrees, 0 and pi, 2 pi, which means 0, that is 0 and 360 degrees, ताकि आप लोगों की सबकी वैल्यूज सेम ना हो। तो रोटेशन मैट्रिक्स एक वैल्यू के लिए फाइंड कर दें, रोटेशन मैट्रिक्स अबाउट एक्स, ये वेरीफाई वाला किधर गया टास्क, हाँ ये वेरीफाई। तो अब आप, अच्छा, जो थोड़ा सा तेज बंदा है वो कहेगा कि सर ये कमांड लाइन पे मैं हर वक्त कमांड क्यों दूं, क्यों ना मैं इसके लिए फंक्शन लिख दूं, एक चीज मैं बार बार कर रहा हूँ कोड, तो मैं बजाय इसके कि ये पेस्ट करूं, क्यों ना बस एक फंक्शन में इसको डाल दूं, ठीक है, और यहाँ से कॉल करूं। तो उसके लिए यहाँ पे एक फोल्डर बनाएं अपने नाम से, इसमें सारा अपना काम सेव करें, माई वर्क या आई ई 450, और उधर एक स्क्रिप्ट बनाए। ये अगर से मैंने लगरे लैब में करना था, लेकिन अगर आपको समझ आ गई तो ठीक है, स्क्रिप्ट बना ले और उधर पेस्ट कर दो, ठीक है। और अब जनाब ये फंक्शन होगा, फंक्शन आर जी, ठीक है, और इसको माई रोटेशन जी के नाम से हम कॉल करेंगे, इसको थीटा देंगे, और ये हमें मुझे लगता है एंड बी चाहिए, हाँ एंड बी चाहिए। अब इसका फायदा मैं आपको बताता हूँ, इसको सेव करें। मैटलैब का असूल ये है कि जो फंक्शन का नाम है उसी नाम से ये फाइल सेव करना है, ये इधर आके सेव हो गए। अब इसको अगर आप बंद भी कर लें, इसको डबल क्लिक कर लें, तो आपने इसके अंदर कोड पेस्ट किया, जो काम आप बार बार कर रहे हैं। और अब इसको कॉल कैसे करेंगे, तो देखें माई रोटेक्स
और थीटा की जगह दे दें π/4, 3 दे दें π/3। अब आपको ये दे रहे आंसर, अब फंक्शन से उठा रहे, तो ये भी हमने अपना एक फंक्शन बनाया है। तो बहरहाल खैर, ये मैटलैब पे आप कितना आपका वो है, कितने कंफर्टेबल हैं, ये टाइम के साथ साथ ये चीज़ें सीख जाएंगे। ये फंक्शन बनाना अगर आपको आज समझ नहीं आई तो डोंट वरी, लेकिन वेरीफाई आप चाहे फंक्शन के तरीके से करें, बल्कि मैं आपको ये कोड दे देता हूँ। अगर आप खैर कोड दे दिया तो फिर तो आप कुछ नहीं करेंगे, चलें कोड नहीं दे रहे, आप फंक्शन ये भी कोड लिख लें कि भाई देखें हमारे इंजीनियर का बेसिक काम क्या होता है। हमें इस तरह की कोई मैथमेटिकल चीज़ें दी होती हैं, हम उसको समझते हैं, उससे कॉन्सेप्ट्स निकालते हैं और कंप्यूटर पे उसको कैलकुलेटर की तरह प्रोग्रामिंग के थ्रू मैटलैब में इम्प्लीमेंट करके आपको आंसर्स बताते हैं। अब ये मैं हाथ से भी कर सकता हूँ, लेकिन आप हाथ से कब तक करेंगे? अभी अगर आपको 5 मैट्रिसेस को इस तरह मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो वो फिर लगे रहेंगे। फिर ये 3/3 से भी आगे की बात चली जाएगी, 4/4 मैट्रिक्स पे जा रहे हैं, उसको इन्वर्ट करना, उनको मल्टीप्लाई करना, उनको ऐड करना, आ, ये सारा फिर मैटलैब के बगैर नहीं कर सकते आप। तो इसलिए सबसे पहले आप मैटलैब के साथ खुद को फेमिलियर कर दें, और उसका एक ही हाल है कि मैटलैब के सामने बैठे रहें। शुरू में कम समझ आएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता यू विल गेट फेमिलियर। इट्स अ मॉडर्न कैलकुलेटर। ये इंजीनियर्स के लिए ऐसे ऐसे जैसे आप मैथ के क्लास में आपके हाथ में कैलकुलेटर का होना मस्ट था। दिस इज अ मॉडर्न कैलकुलेटर। ओके, क्वेश्चंस, मोर क्वेश्चंस? इसको मैं स्टैंडर्ड रोटेशन मैट्रिसेस इसलिए कह रहा हूँ कि ये अबाउट एक्स है, वाई है और जी है। इसके अलावा भी हो सकती हैं, किसी भी वेक्टर के अराउंड आप एक चीज को रोटेट कर सकते हैं। आप कहते हैं कि भाई मैं टेबल पे स्क्रू कर रहा हूँ, पेज को मैं वर्टिकली कर रहा हूँ, ठीक है, हम करेंगे वर्टिकली, मेरा एक्स एक्सेस है, इसका मतलब आप एक्स के अराउंड स्क्रू को रोटेट करेंगे 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 तो ये टाइट हो जाएगा। दूसरा बंदा कहता है नहीं यार, मैं इसको मैंने छत पे, सॉरी इस कील को मैंने रूफ पे करना है। आप कहेंगे अच्छा, पिछली बार तो मेज था तो हम एक्स के अराउंड रोटेट कर रहे थे, अब चूंकि आप ऊपर रोटेट करेंगे तो आप नेगेटिव एक्स के अराउंड करेंगे। तो इस तरह ये अभी एक्स फ्रेम्स आपको समझ आ जाएंगे। ये मैट्रिक्स थोड़ा सा इसकी थ्योरी आपकी डेप्थ में हम जाएंगे, इट विल स्टार्ट मेक सेंस टू यू। फिलहाल आप मैटलैब पे फोकस रखें, ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? ओके सर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो तो बता दें, वरना यू कैन पेस्ट इट इन द गूगल क्लासरूम ऑल्सो। अगर कहीं पे सीरियसली आप फंसते हैं, नकल ना करें, नकल करके आप अपने साथ ज्यादती करते हैं। डोंट ग्रेड कुछ भी नहीं, असल चीज लर्निंग है। इंजीनियरिंग इज ऑल स्किल। स्किल नहीं डेवलप हो रहा, ये प्रोग्रामिंग ये स्किल है, ये मैटलैब ये स्किल है, ये रोबोटिक्स आई थिंक आपके लैब में जो पड़ा हुआ है वो मैं रोबोट का मॉडल कर लूंगा, फिर उसको इधर एनिमेट कर लेंगे, ठीक है? तो जेरूसलम में जो एक्चुअल पड़ा हुआ है फिर किसी दिन खैर है उसको विजिट भी कर लेंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इंडस्ट्रियल रोबोट को हम यूज में लाएंगे तो हमें किस किस चीज की जरूरत है। चलें जी, if you have no question, I'll see you next lab is on Friday, but we'll meet on Tuesday anyway. Uh, then inshallah we'll explore the theory. ठीक है, इसमें सिर्फ आप इंडस्ट्रियल रोबोट्स को एनिमेट नहीं कर सकते, यू कैन ऑल्सो डू मोबाइल रोबोट्स हियर, ठीक है? जैसे गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी, तो ऑल दोज थिंग्स आर पॉसिबल। ठीक है, चलें जी, थैंक यू। क्वेश्चन नहीं है तो आई स्टॉप हियर।